Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope everyone is fine, safe, healthy. You are listening to the voice of your course instructor of Human Resource Management, BUSA 2115, MA Educational Leadership and Management, second semester, Dr. Muhammad Faisal Farid from University of Education, Faisalabad campus. So far, we have discussed a lot of things about human resource management in previous online classes. Like in the week 1, that was an introduction to human resource management, where we discussed about the general concept, its models. Then, in the context of education, we discussed what is human resource management. In the next week, we plan for human resources. What are the demands, what are the supply, what is the manpower requirement, and all related aspects. When we entered to the third week, we started recruitment and selection process. In the previous week, we talked about training and development. So if I look back on these 4 weeks, what we have understood so far, that we have introduced ourselves to human resource management, then we planned for HR, then we recruited and selected few people, we trained and developed them. Now the time has come to look about their performance, that how are they performing in their organization. So in this week we are going to discuss about performance appraisal and evaluation. Now, performance is very important as far as human resource management is concerned. So in this lecture, which is designed as first lecture of this week, we are going to discuss about performance appraisal and evaluation. What we are going to discuss here is, or the learning outcomes for this lecture will be to first of all know about what is performance. Then we have to talk about what is performance appraisal, and then we will be talking about, or we will be knowing about, performance appraisal and evaluation. This is going to be our introductory lecture, so we will be having just introduction of all those things. So as we go to the introduction of performance, one can say the result of activities of an organization or investment over a given period of time. Accomplishment of a given task measured against preset standards of accuracy, completeness, cost, and speed. This is what the Wikipedia says about performance. So it's a systematic process for improving organizational performance by developing the performance of individuals and teams. It is a means of getting better result by understanding and managing performance within an agreed framework of planned goals, standards, and competence requirements. On the simplest way, we can say that performance is often defined simply in output terms: the achievement of quantified objectives. If we go into the detail about what is performance, the Oxford English Dictionary confirms by including the phrase carrying out in its definition of performance. What that dictionary says: the accomplishment, execution, carrying out, working out of anything ordered or undertaken. So high performance result from appropriate behavior, especially discretionary behavior, and effective use of required knowledge, skills, and competencies. When we discuss about the performance and its management, we think about
that performance management must examine how results are attained because this provides the information necessary to consider what needs to be done to improve those results. जहाँ तक हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, तो माशाल्लाह आप लोग बैठे हैं क्लास में, तो आप भी कुछ परफॉर्म करेंगे ना। उसको जब हम परफॉर्मेंस को मेयर करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि आपका बिहेवियर और रिज़ल्ट कैसा है। बिकॉज परफॉर्मेंस जो है वो दोनों चीज़ों को देखती है, आपके बिहेवियर्स को और आपके रिजल्ट्स को। बिहेवियर emanate from the performer and transform performance from abstraction to action, not just the instrument for result. Behaviors are also outcomes in their own right, the product of mental and physical efforts applied to tasks, and can be judged apart from result. So इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं परफॉर्मेंस को, तो आपका बिहेवियर, आपका रिजल्ट दोनों इसमें मैटर करते हैं। आइए ज़रा परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन को देखते हैं। इट मीन्स evaluating an employee's current and or past performance relative to his or her performance standards. Performance management means continuously ensuring that each employee's performance makes sense in terms of the company's overall goals. Performance appraisal can be defined as a formal assessment and rating of individual by the managers at usually an annual review meeting. अब उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फॉर्मल असेसमेंट है और ये उन एम्प्लॉयज़ की रेटिंग है कि वो रेट किए जा रहा है उनको, और उसकी बेस पर आप उसको मे बी आप उसको साल के बाद रेट करें या पीरियडिकली रेट करें, इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो प्रोसेस है जिसमें 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, यानी आप कोई वर्क के अपने काम के हवाले से कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर आप उसको असेस करते हैं एम्प्लॉइज एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दो स्टैंडर्ड्स। हमने बात की थी कि पहले सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, फिर उसकी असेसमेंट है एम्प्लॉइज एक्चुअल परफॉर्मेंस रिलेटिव टू दो स्टैंडर्ड्स, और तीसरी चीज़ ये है कि प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द एम्प्लॉई with the aim of helping him or her to eliminate performance deficiencies or to continue to perform above par. Effective appraisals actually begin before the actual appraisal, with the manager defining the employee's job and performance criteria. ये बहुत important बात है कि effective appraisals जो हैं वो बुनियादी तौर पे कहाँ से शुरू होती हैं? actual appraisal से पहले है, जब वो मैनेजर हिसाब लगाता है कि भाई ये एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे डिस्क्रिशनरी बिहेवियर के हवाले से। तो डिस्क्रिशनरी बिहेवियर रेफर्स टू द चॉइसेस दैट पीपल मेक अबाउट हाउ दे कैरी आउट देयर वर्क, यानी उनकी डिस्क्रिशन पे आ गई है ना ये बात, उनके सवाबदीद पे आ गई है कि हाउ विल दे कैरी आउट देयर ओन वर्क and the amount of effort, care, innovation and productivity behavior they display. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को, अपने स्वाबदीदी बिहेवियर को ज़ाहिर करते हुए क्या काम ये कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस हैं या बिजनेस की परफॉर्मेंसेस हैं, तो experience of success seen in performance outcome helps reinforce positive attitude. हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस की, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। अब क्यों अप्रेज
परफॉर्मेंस क्यों परफॉर्मेंस کو اپریز کیا جائے، کس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے سب آرڈینیٹس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں یا ان کو میئر کرتے ہیں. تو یہ 5 ریزنز یہاں پہ دی ہوئی ہیں، اور بھی بے شمار ہو سکتی ہیں لیکن یہاں جو بنیادی طور پہ ہیں وہ یہ 5 ہیں. Most employers base pay, promotion and retention decisions on the employees appraisal. یعنی اپنے سب آرڈینیٹس ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ، ان کی پروموشن، ان کا ریٹینشن یا ان کی جو فیوچر کی پرفارمنس ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسی پرفارمنس پہ وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ افیکٹ کرتا ہے. Appraisal play a central role in the employee's performance management process. ظاہری سی بات ہے کہ یہ ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے امپلائیز کی پرفارمنس کے حوالے سے. جو اپریزلز ہیں وہ مینیجر کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا سب آرڈینیٹ کیسے کام کر رہا ہے، اور مینیجرز پھر اسی انداز سے اپنے سب آرڈینیٹس کے لیے ڈیولپ کرتے ہیں پلان، تاکہ جو ان کی کوئی ڈیفیشنسیز ہیں یا ان کو کسی ریکوائرمنٹ ہے کوئی ٹریننگ کی، so they can arrange for it. So they develop a plan for correcting any deficiencies and to reinforce the subordinate strengths. اسی طرح سے appraisal provide an opportunity to review the employee's career plans in light of his or her exhibited strengths and weaknesses. پھر اسی حساب سے اس کے لیے اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کو آگے کیریئر پلاننگ اس کی کیسے ہو سکتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ appraisal enables the supervisor to identify if there is a training need and the remedial steps required. نہ صرف ٹریننگ نیڈ چاہیے بلکہ کوئی اور اگر ٹریننگ کی یا ریمیڈیل اسٹیپس ہے تو وہ بھی ڈھونڈ لیا جائے. Now this is going to be an activity for you. So the title of this activity is Sample Faculty Evaluation Survey. What you have to do is, well, you will go through these 8 statements which I have placed here, and you have to think very carefully about these statements, and then you have to decide how. Let me explain a bit for you so that you can do it correctly. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایویلویشن دینی ہے فیکلٹی ممبرس کے بارے میں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ امپروو ہز اور ہر ٹیچنگ پریکٹسز. اور یہ جو 8 اسٹیٹمنٹس ہیں یو ہیو ٹو اسائن اے اسکور. ہائیسٹ اسکور of 7 for outstanding, 4 for average, and lowest score of 1 for needs improvement. And NA if the question is not applicable. آپ کے یہاں بے شمار ٹیچرز ہیں، آپ کو بہت سے ٹیچرز پڑھا بھی رہے ہیں، کچھ آن لائن ہیں. اس سے پہلے جب فیس ٹو فیس کلاسز ہوتی تھی یو ور ڈوئنگ یو ور لسننگ ٹو یور ٹیچرز. سو آپ کو ان 8 اسٹیٹمنٹس کو غور سے پڑھنا ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو ایویلویٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ سچویشن. پہلی اسٹیٹمنٹ instructor was prepared for his or lectures. Second, the course were consistent with the course objectives. The instructor was fair in how she graded me. Then you have to look for the fourth statement. The instructor carefully planned and organized his course. The instructor was available during his or posted office hours. Or the instructor responded to online inquiries in a timely manner. In terms of knowledge and our experience, the instructor was competent to teach this course. And overall, how would you rate this course? So this is the way you evaluate your teachers. So then comes performance evaluation. It's a formal and productive procedure to measure an employee's work and result based on their job responsibilities. Periodic performance evaluation is an employee's report card from his or her manager that acknowledges the work he/she has done in a specific time and the scope for improvement. جیسے آپ لوگوں کی ایویلویشنس ہوتی ہیں، اسکور کارڈ بنتا ہے کہ بھائی اس نے اتنا کام کیا، اتنے سے کیا، کسی طرح سے پھر جو امپلائی ہے اس کا بھی بنتا ہے. اور performance evaluation lets an employee understand where does he/she stands
एज कम्पेयर टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो अकेला तो नहीं है, ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत से लोग हैं, जब उसको परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन दी जाती है तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वेयर ही और शी इज़ राइट नाउ इन देयर। सो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पर्पस क्या है, फिर उसके क्वेश्चन हैं, प्रोसेस है, मेथड्स हैं और एग्जांपल्स हैं। ये आगे चल के हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम वोकेबलरी ऑफ दिस परफॉर्मेंस वी आर मेकिंग आवर सेल्फ एक्वेंटेड विद, हम ये सिर्फ वोकेबलरी को देख रहे हैं। आगे चल के हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ नाम ले रहे हैं। सेल्फ एवेल्यूएशन है, ज़ाहिर सी बात है नाम से है, तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सेल्फ एवेल्यूएशन ये है कि व्हेन एन एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू रेट देमसेल्फ यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी उनसे जब उनके बारे में पूछा जाता है। इसी तरह से 360 डिग्री एम्प्लॉय एवेल्यूएशन है, तो एम्प्लॉय रेट करता है इन टर्म्स ऑफ द एडवांसमेंट मेड बाय हिम हर विद इन द टीम एज वेल एज द एक्सटर्नल टीम्स। फिर हम ग्राफिक रेटिंग स्केल की बात करते हैं, और ये एक जो सुपरवाइज़र हैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें न्यूमेरिक या टेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं वो पुअर और एक्सीलेंट के दरमियान में, स्केल के दरमियान में आता है, और आप उस तरह से रेट करते हैं। फिर आता है डेवलपमेंटल चेकलिस्ट है, जिसमें कोई ना कोई उन्होंने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ना कोई रोड मैप बनाया होता है अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से, और फिर ये उस हिसाब से करते हैं। इसी तरह से डिमांडिंग इवेंट्स जो हैं उनकी एक चेक लिस्ट होती है, और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वर्कर्स, उनकी ज़िंदगी में आते हैं। आपको एक मैं यहाँ वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी दे दी है, आपके कोर्स के साथ भी होगी। इसको आप देख लीजिएगा, और इसके बाद आपने एक छोटी सी असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ कि आफ्टर गोइंग थ्रू द कंटेंट्स व्हाट आर योर आइडियाज़ अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एवेल्यूएशन, and afterwards we will be discussing the detailed things which we have according to our course outline. Thank you very much.